Good morning everyone. As we were discussing about the central nervous system, in that spinal cord we have completed, and today we are going to learn about the pons, which is the part of the brain stem. Yes, so brain stem क्या होता है? Midbrain, this is the midbrain, pons and medulla, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारी ब्रेन स्टेम को बनाते हैं. ओके, यस, ये तीनों मिलकर के हमारी ब्रेन स्टेम को बनाते हैं. सो दिस pons is the part of the brain stem. Now what are the functions of the pons? So it regulates the breathing, sleep wake cycle, fine motor control. Fine motor control means like we are holding the pen, we hold the spoon. Okay, so these are the fine motor control. It also plays important role in the equilibrium and facial expressions. Okay, so what are the functions of brain stem? It regulate breathing, sleep wake cycle, circadian rhythm. Okay, sleep wake cycle, maintain the equilibrium, fine motor control, and facial sensations, and important role in facial sensations. Okay, so these are the functions of the pons. Okay, and it bridges the cerebrum and cerebellum. Okay, so cerebrum, this is the cerebrum of the brain, which is the largest part of the brain. तो ये bridge करता है, connect करता है cerebellum से cerebrum को. Okay, so pons bridges the cerebellum and cerebrum. Okay, now next, so pons के above में क्या present है? Midbrain present है, and below क्या present है? Inferior में medulla present है. Okay, so ये क्या है? बीच में midbrain and medulla के बीच में present है हमारा pons part. Okay, next we will learn this by one diagram. So I am here drawing one diagram. Okay, yes, this is the midbrain, this is pons, and this is medulla oblongata. Okay, yes, so between the midbrain and pons there is inferior pontine sulcus. This is superior pontine sulcus, and between pons and medulla this is inferior pontine sulcus. Okay, so between midbrain and pons this is superior pontine sulcus, and between pons and medulla this is inferior pontine sulcus. Okay, and behind this the pons is divided into two parts. ये जो part है, this is the base of pons, and this part is called the tegmentum. Of the pons. Okay, so half part आपका base हो गया and half part आपका tegmentum हो गया. Okay, now posteriorly, अब इसके posterior part में क्या है? Posteriorly it is covered by the fourth ventricle. This is the fourth ventricle. इसका half part is covered by the fourth ventricle, and half part is covered by the aqueduct of cerebrum. And this aqueduct of cerebrum connects the third ventricle and fourth ventricle. ठीक है, तो इसका जो half part है, it is covered by the fourth ventricle, and half part is covered by the aqueduct of cerebrum, and which connects the third ventricle to the fourth ventricle. Okay, now this pons and और इसके पीछे क्या प्रेजेंट होता है हमारा?
बिहाइंड दिस क्या प्रेजेंट है, सेरिबेलम प्रेजेंट है, ठीक है, अभी हमने डायग्राम में देखा था। सो दिस इज सेरिबेलम, बिहाइंड दिस क्या प्रेजेंट है, सेरिबेलम प्रेजेंट है। और ये जो सेरिबेलम और पॉन्स है, दे आर कनेक्टेड बाय द मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय द मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के साथ में ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। सो दिस मिडिल सेरिबेलर पेडंकल क्या है, व्हाइट मैटर का एक बैंड है, ओके, यू कैन से द व्हाइट मैटर ट्रैक्ट, व्हाइट मैटर ट्रैक्ट, ओके। सो पॉन्स और सेरिबेलम किससे कनेक्टेड है, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से कनेक्टेड है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ व्हाइट मैटर ट्रैक्ट, ओके, दिस इज द काइंड ऑफ द व्हाइट मैटर ट्रैक्ट। एंड एंटीरियरली इसके आगे पर एक हमारी बेसिलर आर्टरी आती है। सो दिस इज द बेसिलर आर्टरी, दिस इज बेसिलर आर्टरी which also gives the branch that is called the superior cerebellar artery, okay, anteriorly we can see the basilar artery, okay. Next there are some nerve endings also present, okay. So सबसे पहले हम देखेंगे, again I will draw one diagram to understand the nerve endings, okay. So this is midbrain, this is pons and this is medulla, okay, yes, okay. तो यहाँ से एक हमारी सेंसरी नर्व निकलेगी, कौन सी नर्व है ये बेटा, सेंसरी नर्व है, दिस इज द फिफ्थ नर्व। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ नर्व, फिफ्थ नर्व का नाम क्या है, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व, और ये कौन सी है, सेंसरी नर्व है, ओके, सेंसरी नर्व है, यस, ओके। सो फ्रॉम द मिडिल द फिफ्थ नर्व इमर्जेस एंड इट गिव्स द डिवीजन्स, ये 3 डिवीजन्स देती है। कौन कौन से डिवीजन्स हैं, एक है हमारा ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिलरी डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, एंड थर्ड है हमारा मैंडिबुलर डिवीजन, थर्ड इज मैंडिबुलर डिवीजन, ओके। एंड एक और मोटार डिवीजन भी होता है यहाँ से, सॉरी, एक मोटार नर्व भी यहाँ से इमर्ज होती है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास्टिकेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास्टिकेशन। ये हमारी सेंसरी नर्व थी और ये हमारा मोटार नर्व है, ओके। सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉन्स, थैंक यू।